Ceremonial welcome of migratory birds to marks World Tourism Day at Jatinga in Dima Hasao. As the world-famous Jatinga migratory birds started coming, the Dima Hasao Forest Department and Tourism Department on Saturday evening ceremonially welcomed the winged guest, coinciding with the celebration of World Tourism Day at the Jatinga festival site. The occasion drew enthusiastic participation from locals, nature lovers, and cultural performers who came together to highlight the natural allure of Dima Hasao and its significance in ecotourism. The program was graced by Don Painon Thausen, executive member of the NC Hills Autonomous Council, who attended the program as the chief guest. Addressing the gathering, Thausen lauded the uniqueness of Jatinga as a natural habitat that attracts global attention, saying that the migratory birds have become a symbol of the district's identity. He also emphasized the need to balance tourism with conservation in order to preserve Jatinga's ecological heritage for future generations. The event also featured awareness messages on the protection of migratory species and responsible tourism practices. Joshingdao Phonglo, chairman of Tourism Department, highlighted that the observance of World Tourism Day at Jatinga illustrates the district's potential to emerge as a premier destination for ecotourism in the district and arrival of migratory birds beginning around the season and inviting visitors and researchers from across the globe. Earlier, to mark the World Tourism Day, a marathon and drawing competition was held at Hafong, for which a prize distribution was held on the event. तो आज के दिन हमारे दिमा हसाओ के टूरिज्म डिपार्टमेंट और दिमा हसाओ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है टू सेलिब्रेट वर्ल्ड टूरिज्म डे एंड आल्सो टू वेलकम सेरेमोनियल वेलकम ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ जाटिंगा। ये दोनों भी हम लोग का मतलब आज के दिन में रिलेट करता है बिकॉज दिमा हसाओ में माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ जाटिंगा एंड बर्ड सुसाइड फिनोमेना ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है हमारे टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। तो आज की इस प्रोग्राम के थ्रू से हमने कोशिश किया है कि टूरिज्म को और भी बूस्ट करें और भी अवेयरनेस फैलाएं इस फिनोमेना के बारे में। जैसे कि हर किसी को पता है कि हर साल एक पर्टिकुलर सीजन में माइग्रेटरी बर्ड्स, वेरी रेयर बर्ड्स, अचानक से रात को आसमान में निकल के आते हैं एंड दे कमिट सुसाइड। क्यों करते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, कैसे मरते हैं, उसके बारे में आज तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुआ। तो इसी को लेके एक अवेयरनेस स्प्रेड करने का कोशिश किया एंड टूरिज्म का इम्पोर्टेंस के बारे में भी हमने थोड़ा प्रचार करने की कोशिश किया। एंड ये इनिशिएटिव है हमारे ऑनरेबल CM दिमा हसाओ श्री देवलाल गोलसा सर के, उसके डायरेक्शन में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड हमने इसी साथ ही अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैराथन भी ऑर्गेनाइज किया था। काफ़ी अच्छा संख्या में पार्टिसिपेशन हुआ एंड बच्चों में जागरूकता लाने के लिए ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स भी हुआ विद थीम्स रिलेटेड टू टूरिज्म एंड कंजर्वेशन। तो उसमें भी बहुत अच्छा नंबर्स, मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स था। तो बहुत इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स था एंड ओवरऑल आज का ये प्रोग्राम सक्सेसफुली पीसफुली कंक्लूड हुआ है। एंड हमारे टूरिज्म को बूस्ट करने में हमारे मीडिया का भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, रोल है। इसलिए मैं मीडिया पर्सन जितना भी आज के दिन आया उन सबको अपने दिल से थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू।